Look at this. The magnificent mountains. Oh my God! The idyllic landscapes. Historic trade routes. The fresh organic food. ये बहुत अच्छे हैं. And the most welcoming people. This is Hunza Valley, the largest district of Gilgit-Baltistan. Gilgit-Baltistan is arguably the most scenic part of Pakistan. There are many reasons why Gilgit is becoming a tourism hotspot, but faster than it can manage. The tourism has become a blind economical race. I am afraid of that. One day this may turn into slums. पावर का बड़ा इशू है. अभी 24 आवर्स के अंदर हार्डली आपको 2 घंटे की बिजली मिल जाती है, उसमें भी डिस्टर्बेंस है. What's life like for a remote people out of reach from the rest of the world, but now the world is at their doorstep? Altit, where the 1100-year-old Altit fort resides. It's the oldest monument in Gilgit. It's also home to a game-changing women's empowerment project. ये पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है कि ख़वातीन कारपेंट्री का काम करे. शिकम में आपने देख लिया, हम ज़्यादातर वुड के साथ काम करते हैं. कारपेंट्री में हमने इंगेज किया है ख़वातीन को. वो ख़वातीन जो किसी भी वजह से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, मार्जिनलाइज्ड और अल्ट्रा पुअर जो ख़वातीन हैं, उनको इकोनॉमिकली हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं. Funded by Aga Khan Cultural Services and the Norwegian Embassy, Shikam Carpentry started in 2008 for these women. ख़वातीन वो है जो हर एक काम कर सकती है, तो कारपेंट्री की तरफ हमने एज अ स्किल टूल हमने इनको दिया है ताकि वो अपने आप को एम्पावर कर सके, वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके. पहले यहाँ पर 6 महीने का ट्रेनिंग देती है, जो चीज़ लेना या चीज़ का नाम लेना, पहचानना, इसमें से 6 महीने बस वही ट्रेनिंग होती है. यहाँ पर जाके यहाँ पर Nadia is one of around 14 female employees at Shikam Carpentry. मेरी छोटी बहन पढ़ती थी, मैंने कहा उसका हेल्प मैं करूँ कि यहाँ पर आके मैंने उसका हेल्प भी की. अभी वो मास्टर PhD करके अब जॉब करना शुरू की है. अभी मैं भी शादी करके बच्चे पैदा किया हुआ हूँ, उसका मैं हेल्प कर रही हूँ, वो बच्चे पढ़ना शुरू किए हैं. At this workshop, the women make furniture, windows, musical instruments and cooking utensils. This spoon is made from the mulberry tree. This one is made from the apricot tree. They also work on construction sites and in plumbing. पहले कहते थे ना यहाँ पर नहीं, लड़कियाँ तो नहीं करेंगे, आप नहीं करें, कोई दूसरा करे. लेकिन हमारा प्रोजेक्ट ऐसा आया था कि अगर करे तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि हम ना कर सके. लेकिन अगर हम अपने इंटरेस्ट से हम काम करें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं. पूरे इस GBC में जहाँ पे हम रह रहे हैं, बहुत मुश्किल इलाके में, वहाँ पे ख़ातून की जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं है इस तरह से जीना. लेकिन हमें कल्चर ने, हमें इस इन्वायरमेंट ने ये सिखाया है कि हम अपने आप को इसमें इंडल्ज करें, और हम बिल्कुल खुशी से चल रहे हैं, जो कि हमारे लिए आसान नहीं है. Hunza's literacy rate is above 95%, the highest in Pakistan. But like many parts of the world, generally, women here are restricted to domestic roles. हमारी जो ख़वातीन है वो कोई 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वो अपने पीठ पे बहुत सारा वज़न उठा के टोकरी में भर के लेके आती है. सो अकॉर्डिंग टू द एल्डर्स और अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, वो कहते कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वो काम वो है जहाँ पे किसी खातून को कोई उजरत नहीं देते हैं. घर में वो एक फ्री लेबर का काम करती है. लेकिन जब वो कमाने के लिए घर से बाहर निकलती है, जहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व हो, वहाँ पे फिर हमारे मर्द हजरात, उनके नॉर्म्स, वहाँ पे उनके कल्चर, वहाँ पे उनके दूसरे चीज़ें वो समझते हैं कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और वो हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ जा रही है. अगर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाके मैं पीठ पे उठा के 20 kg वज़न उठा के लेके आ सकती हूँ, तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि वो हमारे कल्चर का हिस्सा है. और मैं अपने लिए बाहर निकल के कमाती हूँ, तो उससे हमारे कल्चर को ख़तरा है, ये मैं नहीं समझती हूँ. Thanks to initiatives like Shikam, the community has seen a benefit to having women earn a living and gain skills outside of the domestic realm.
ये कोई गलत काम नहीं है, अच्छा काम है कि जो खातून अपना वो मेहनत करके कमाती है तो बहुत अच्छे काम है। अगर मर्द और खातून मिल के काम किया तो कोई बेहतरी आता है। अगर खातून घर में बैठ के अगर खाली मर्द काम किया तो खाली मर्द से कुछ भी नहीं होता है। अगर दोनों मेहनत किया तो कुछ घर बनता है, कुछ संभालता है घर में, जो बच्चे सारा वो उनके लिए खाना पीना तो मुश्किल है ना इसी ज़माने में। किस तरह हम वो एक मर्द किस तरह वो कमाई से उनको पूरा करेगा। अगर दोनों मिल के मेहनत किया तो फिर वो आसानी होता है। The women learn their skills from male teachers, since there are no veteran female master carpenters yet. Abbas Ali is one of the teachers. ये बिल्कुल नया है हमारे ज़िंदगी में, ये ख़वातीन को ये काम सिखाना बिल्कुल नया था। आने वाला मुस्तकबिल पे यही होंगे टीचर, जो ख़वातीन को अगर सिखाना हो गया तो ये ख़वातीन मास्टर कारपेंटर बन के ये ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को सिखाएंगे ज़रूर। Shiqam, meaning green in the local language Brushaski, also aims to protect and preserve the environment. दरख्त को ना लगा के और हम पैदा करते हैं, क्योंकि यानी कटिंग करके उसको ऐसे नहीं करते हैं कि बस ज़ाया करके नहीं लगा के उसको ऐसे नहीं करते हैं। With tourism booming in Hunza now more than ever, Shiqam's aim to protect the environment has become even more difficult. टूरिज़म की वजह से इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं है कि हमने किस तरह से इस इलाके में जाके इस इन्वायरमेंट को समझते हुए, यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स को समझते हुए, यहाँ इलाके की जो रहन सहन है उसको समझते हुए हमारे टूरिज़म को उनको ट्रेन करने की, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि इस इलाके की खूबसूरती को भी बरकरार रख सके, इस इन्वायरमेंट को भी बरकरार रख सके और पूरे पाकिस्तान का ये जो अहम चेहरा है गिलगित बल्तिस्तान, इसको पूरे दुनिया में एक वाकई टूरिज़म जो डेस्टिनेशन है इसको डिक्लेयर कर सके हम। It's very hard, no? After spending the day with Shiqam's carpenters, it was time to meet up with another female cooking up a storm, an Altit businesswoman serving some serious grub. I'm going to meet Safina, and runs her own cafe here in Altit, and she's going to show me how she makes some local traditional food. I show Chapsi Dawdo like traditional soup, and Hunza pizza, chapshiro. With no electricity, in this very cold, concrete, confined space, Safina whips up what seems like time-consuming meals in just 20 minutes. From scratch. ये चिकन से बनता है? हर चीज़ से बनती है, ज़्यादातर बीफ से बनाते हैं, बट मैं ज़्यादातर चिकन यूज़ करती हूँ। For the dawdo soup, she's cooking pieces of chicken in sauteed onions and apricot oil, seasoned with salt, turmeric and black pepper. ये कैरोट्स, कैप्सिकम, कैबेज, इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सोया सॉस और चिली सॉस, बस हल्का सा सोते करनी है, ठीक है। ये जो ही गल जाए इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे, उसके बाद आपके सामने आटा को गूंद के मैंने नूडल्स निकाले हैं। So ये बस buckwheat flour है? Yes. The noodles are made from this organic homegrown buckwheat flour, kneaded together with glacier water. ये ग्लेशियर का पानी से हम खाना घरों में यहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसमें कोई बीमारी और कोई मिलावट नहीं होती है। It's then rolled out thinly like a chapati. ये अभी इसके ऊपर हमने डालना है आटा, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ चिपक न जाए, समझ आई। और यहाँ से हम करेंगे फोल्ड, इसके ऊपर भी आटा डालेंगे, फिर यहाँ से करेंगे फोल्ड, फिर यहाँ से। I didn't think it was that easy to make noodles. I can see there are some East Asian influences here, but unlike East Asian food where you may cook the noodles separately beforehand, she directly put the noodles into the broth, so it's boiling and cooking in the soup. While the noodles cook, Safina starts on the chopped churro. She cooks small boneless pieces of chicken in apricot oil and salt and turmeric. ग्रीन चिली, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी, अगर कोई भी चीज़ थोड़ा स्पाइसी ना हो तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। Said like a true Pakistani.
Into that, she's adding chopped onions and gives it a toss. Next, she's making the buckwheat encasing. With the same dough as the noodles, Safina rolls out 2 chapatis. Apricot sauce. Then adds the chicken with apricot sauce. एप्रिकॉट सॉस कैसे बनता है? ड्राई एप्रिकॉट को भिगो के हाथों से सही से निचोड़ के बनाते हैं। अगर फ्रेश एप्रिकॉट हो उसके साथ भी बन सकता है? नहीं जान, उसका टेस्ट नहीं होगा ना। Just like a pie, the dough is crimped along the edges and is ready to cook on a hot pan with apricot oil. और हम अभी इसको प्यार से रखेंगे आहिस्ता। अब रख लिया। Our traditional Hunza meal is done. I cannot wait to devour this. I'm not a soup person, usually I don't order soups, but here you really need a hearty soup, and this is the perfect hearty soup. It is so good. When did you open this cafe? Maybe 5 साल। पहले तो मैं फर्स्ट थी क्योंकि हर किसी को कोई कहते थे बहुत अच्छा हुआ है, कोई कहते थे एक लेडीज़ क्यों आई है, उफ। फिर मेरे पीछे बातें बनाना ये वो। अगर कोई भी खातून ना बिज़नेस के लिए मैदान में निकलती है तो मैं भी किसी मर्द से कम नहीं। ये हम काटेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम प्यार से उठाएंगे, डिश में रखेंगे और उठाएंगे, डिश में रखेंगे। आ जाओ। अच्छा। ये सफीना स्पेशल छाप शुरू। Let's have a try of this. The chicken is cooked in this lovely, slightly tart and sweet apricot sauce, and that just gives it an abundance of flavour. कि हम सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, लाइक एप्रिकॉट ऑयल हो गया, सब्ज़ी हो गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो कुक किया। ये ना ठंड में ज़्यादातर यूज़ होती है क्योंकि ठंड में ना बॉडी को हीट देती है। मेरे लिए ये तो पाकिस्तान में ये तो एक स्टार्टअप है। मैंने आउट ऑफ कंट्री भी जाके ना मैंने इंटरनेशनल पे अपना कैफेज खोलने का मेरा एक विजन है। Yes. And more power to you, Safina. The women of Hunza are quite possibly changing Pakistan's course of history, with so many now pursuing a career and becoming financially independent. Gilgit is set to become a world-renowned tourism magnet, creating more jobs for the locals, and its women are no longer taking a back seat. Coming up, we're going to find yak. Look at these yak. And we're going to try some yak meat as well. Did you hear that? Did you hear that move? ये क्या है ये?